Hello students, most welcome to the Awakened Citizen Program digital version for year 2 and for 8th class. We completed year 1 in 7th class and now we will start the second version, and that is the first session we are starting here. Students, in this session you all discover how unfolding one's universal possibilities is the foundation of a great character and personality and has the power to transform one's personality and contribution in the world. So first we will take a quick recap in this exploration 1. Last year we learned that each one of us carries within us a vast infinite source of power, strength and goodness. We manifest this infinite power as different kinds of possibilities. Just physical possibilities, knowledge possibilities, universal possibilities. Physical possibilities and knowledge possibilities are known as the unique possibilities also. And here on the screen you can see some of the unique possibilities that we can bring out or develop in ourselves. First is physical possibilities, just like by playing games and sports, expanding the limits of our world, expressing ourselves and many more. And we get the knowledge possibilities by inventing new things, realizing a creative version and expanding the limits of human knowledge and several more. In year 1 we learned about all the possibilities, and here is the universal possibilities. While each of us may only bring out a few unique possibilities, all of us can bring out the 6 universal possibilities. Number 1, being heroic. Number 2, expanding ourselves. Number 3, developing Shraddha, recognizing the sacred. Number 4, living in harmony. Number 5, seeking perfection. And number 6, being a truth seeker. So students, developing our unique possibilities helps us become great in some areas, but developing our universal possibilities helps us become great human being. So here are some personalities. We studied about them in first year. So some case studies of great Indians and the possibilities that they brought out in their lives. So we will now study each of these cases. So it's a first slide in front of you. Jamshedji Tata, a businessman. Do you remember Jamshedji Tata from last year's class? So let's know about him. As a businessman, he set up textile mills to convert raw cotton into higher value thread for cloth. He also brought loss-making companies and turned them into profitable value-creating business. Jamshedji Tata had a vision that India must develop its own industries and not depend on British goods. His vision led to the creation of India's first steel plant, that is a Tata Steel, India's first power plant, that is a Tata Power, and India's own institution for advanced scientific education and research, Indian Institute of Sciences. The first Indian owned luxury hotel is Taj Mahal Hotel. In each snapshot, identify which of the following unique possibilities were demonstrated and justify your answer. Playing games and sports, and number 2 is adapting to the environment we live in, expressing ourselves, engaging with the culture and society, creating values, expanding the limits of my world, realizing a creative version, working with collective intelligence, inventing new things, developing solutions to the complex social challenges, learning in all parts of our life,
or expanding the limits of human knowledge. Out of some unique possibilities, Tata Jamshedji demonstrated creating values, and number 2 is realizing a creative vision. जमशेदजी टाटा ने एक व्यवसाय के रूप में जो रॉ मटेरियल था, जो कच्चे कपास को था, उसको उच्च मूल्य के धागे में परिवर्तित करके कपड़ा मिलों की स्थापना की और साथ ही उन्होंने घाटे में चल रही कंपनियों को भी खरीदकर उन्हें लाभदायक मूल्य सृजन करने वाले व्यवसाय में बदल दिया। दूसरी स्नैपशॉट में या प्रसंग में उन्होंने कल्पना की थी कि भारत को ब्रिटिश माल पर निर्भर न होकर अपना उद्योग खुद ही विकसित करना चाहिए। जैसे उन्होंने टाटा स्टील, टाटा पावर, भारतीय विज्ञान अनुसंधान और सबसे पहला जो निजी प्राइवेट जो विलासितापूर्ण होटल था, ताजमहल होटल, वो भी उनका ही विकसित किया हुआ था। तो कुछ जो यूनिक पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, उसमें जो फर्स्ट स्नैपशॉट था, उन्होंने अपने मूल्य का सृजन करना इसको प्रदर्शित किया, तथा जो दूसरा स्नैपशॉट था उसमें उन्होंने रचनात्मक परिकल्पना को साकार करना, इस विशिष्ट संभावना को प्रदर्शित किया। इन एक्सप्लोरेशन सेकेंड बी, हियर इज द नेक्स्ट स्नैपशॉट, स्नैपशॉट थर्ड. Jamshedji wanted to go beyond just making money for himself and his family. He expanded his vision to include the whole of India from 1880 to his death in 1904. Jamshedji's whole life revolved around how he could build India into a developed nation with industries of her own. In snapshot fourth, you can see that Jamshedji faced ridicule and opposition from both Britishers who didn't want India's independence and Indians who didn't have faith in our own capabilities. But he didn't give up on his vision. He courageously overcame these obstacles. In this snapshot, snapshot 5, we can see that he wanted his institutions and industries to be places of excellence. To ensure they were world class, that is the international quality, he traveled to different countries looking for the best machinery, the best people, learning the latest technology that could be used, etc. So in each snapshot, identify which of the following universal possibilities were demonstrated by Jamshedji Tata. Justify your answer also. Number 1, being heroic. Number 2, expanding myself. Number 3, living in harmony. Number 4, seeking perfection. Number 5, developing Shraddha. Or number 6, being a truth seeker. So here are some universal possibilities that Jamshedji Tata demonstrated. In snapshot 3rd, he demonstrated being heroic, and snapshot 4, he demonstrated the universal possibility expanding myself, and snapshot 5, he demonstrated seeking perfection. So यहाँ हमने जाना कि जमशेदजी टाटा एक ऐसे इंसान थे जो सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए पैसे अर्जित करने से परे जाना चाहते थे। उन्होंने संपूर्ण भारत को शामिल करने के लिए उन्होंने अपनी कल्पना को व्यापक बनाया, उसका दायरा बढ़ाया और 1880 से अपने मृत्यु पर्यंत 1904 तक उन्होंने अपना पूरा जीवन भारत के निजी उद्योगों को विकसित करने में लगा दिया। जमशेदजी को जो भारतीय थे जिन्हें अपनी क्षमताओं पर विश्वास ही नहीं था, तो उन्हें वह अंग्रेज़ों से जो कि उन्हें आज़ादी ही नहीं चाहते थे उनकी, यानी कि भारतीयों को आज़ादी देना ही नहीं चाहते थे, तो दोनों के विरोध व मजाक का सामना उन्हें करना पड़ा। लेकिन उन्होंने अपनी परिकल्पना का त्याग नहीं किया, उन्होंने हर बाधा को हिम्मत से उसका सामना किया। जैसे कि हमने स्नैपशॉट 5 में पढ़ा था कि उन्होंने उद्योगों व संस्थानों में उत्कृष्टता देखने के लिए और ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो वर्ल्ड वाइड हो, विश्व स्तरीय हो, तो उन्होंने सबसे अच्छी मशीनरी, सबसे अच्छे लोगों की तलाश करने में तथा नई तकनीकों को सीखने के लिए भी जिन्हें प्रयोग में लाया जा सके, तो उन्होंने विभिन्न देशों का भ्रमण किया।
जगह जगह जाकर उन चीज़ों के बारे में जाना और उनमें से ही कुछ सार्वभौमिक या यूनिक पॉसिबिलिटीज़ जो उन्होंने यहाँ पर प्रदर्शित की, तो वो थी साहसी होना, स्वयं का विस्तार करना और उत्कृष्टता की खोज करना। So students, here are some examples of unique possibilities that Jamshedji Tata demonstrated. First is creating value, second in realizing a creative vision. Some examples of universal possibilities he developed: first, being heroic, second, expanding myself, and third is seeking perfection. For his contributions, he is regarded as the father of Indian industry. If you wanted to become a visionary businessman like Jamshedji Tata, so here are the question for you, then what kind of situations are you likely to face in today's contest? Give concrete examples. And the question second is, what universal possibilities will you need to develop for this? Explain why. So these are the possibilities: being heroic, expanding myself, living harmony, seeking perfection, developing Shraddha, being a truth seeker. So try to think about that और इसमें आप इसका आंसर अपने आप से पूछने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा, तो आपको पता चलेगा कि जो जमशेदजी टाटा ने किया वहाँ पर उस सिचुएशन और उस परिस्थिति में अगर आप हो तो आप क्या करेंगे. Now in this exploration third A, we will know about the Dr. M.S. Swaminathan, scientist. So snapshot 1, we can see here, as a researcher he contributed to the knowledge in his field of agriculture sciences by his breakthrough experiments and papers on potatoes, plant breeding, etc. Swaminathan had a vision to rid the world of hunger and poverty, and all his research, innovations, etc. were to make this vision a reality. Swaminathan invented a new type of disease-resistant mixed breed wheat seed and gives more yield. He chose to tackle the complex problem of food storage with his new seeds. He built 2000 model farms. He educated farmers to use it along with fertilizers, new irrigation methods, etc. Dr. M.S. Swaminathan also worked collaboratively, combining the knowledge and thinking of other scientists, farmers, etc. He worked with the government for policy and international agencies for funding. And yes, Swaminathan's efforts led to India becoming self-sufficient in food production within a few years. In each snapshot, identify which of the following unique possibilities were demonstrated by Swaminathan. So justify your answer. Playing games and sports, adapting to the environment we live in, expressing ourselves, engaging with the culture and society, creating values, expanding the limits of my world, realizing a creative vision, working with collectively intelligence, inventing new things, developing solutions to complex social challenges, learning in all parts of our life, extending the limits of human knowledge. So here are some unique possibilities that demonstrated by the Swaminathan: realizing a creative vision, working with collective intelligence, inventing new things, developing solutions to complex social challenges, and extending the limits of human knowledge. एक शोधकर्ता के रूप में स्वामीनाथन ने कृषि विज्ञान के क्षेत्र में अपने ज्ञान का योगदान दिया. विज्ञान के क्रांतिकारी प्रयोग करके नए किस्म के आलू, अन्य पौधे विकसित करके उनके बारे में किताबें लिखकर उन्होंने अपने क्षेत्र में ज्ञान को और ज़्यादा बढ़ाया जिसे वो प्रयोग में ला सकें. उन्होंने विश्व को भूख गरीबी से मुक्त देखने की परिकल्पना की तथा उनके सभी अनुसंधान, वो जितनी भी नई खोजें थी, वो सभी इसी कल्पना को साकार करने के लिए आगे वो बढ़ाते रहे.
उन्होंने गेहूं की कुछ ऐसी नई नस्लों के बीज का आविष्कार किया जो रोग प्रतिरोधी थे, अर्थात जो बहुत सारे रोग का प्रतिरोध करते थे, उन्हें होने से रोकते थे और जिनकी उपज अधिक हो सकती थी अगर हम चाहते हैं तो। उन्होंने नई बीज की सहायता से भोजन की कमी की जटिल जो समस्या थी उसे निपटने के लिए उसे चुना। उन्होंने 2000 मॉडल फार्मों का निर्माण भी किया। उन्होंने किसानों को नई सिंचाई के तरीके बताए, खाद आदि के बारे में उन्हें पूरी तरह से शिक्षित किया। उन्होंने अन्य वैज्ञानिकों, किसानों की सोच व ज्ञान इत्यादि को एक साथ संयोजित कर एक साथ उनके ज्ञान को एकत्र करके उनके सहयोग से काम किया। उन्होंने नीति निर्धारण के लिए सरकार व वित्तीय सहायता के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ काम किया। तो उनके इसी प्रयास ने भारत खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में कुछ ही वर्षों में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर कर दिया था भारत को। और कुछ विशिष्ट संभावनाएं जिनका प्रदर्शन किया गया था स्वामीनाथन के द्वारा। सो इसमें नंबर 1 में तो मानव ज्ञान की सीमाओं का विस्तार किया था उन्होंने, जो आपका पहला प्रसंग आया था। और दूसरे प्रसंग में उन्होंने रचनात्मक परिकल्पना को साकार किया। तीसरे प्रसंग में उन्होंने नई वस्तुओं का आविष्कार करना, इस संभावना को प्रदर्शित किया। और जो आपका चौथा प्रसंग था उसमें जटिल सामाजिक समस्याओं के समाधान को विकसित किया। तथा पांचवें प्रसंग में सामूहिक बुद्धिमत्ता से कार्य करना, इस विशिष्ट संभावनाओं को प्रदर्शन किया। And in this picture you can see then Dr. M.S. Swaminathan is with the Indian Prime Minister Lal Bahadur Shastri when he was young, inspired by the Swami Vivekananda's teachings. He alone lives who lives for the other. He wanted to apply his education in science to serve the country. He says, "My family had wanted me to get a medical degree because my father had been a doctor. When I decided I must do agriculture because that is the area in which I thought I could be the greatest help to the independent India." M.S. Swaminathan chose his PhD subject in an area where the nation would benefit most. After doing his PhD abroad, he got lucrative offers there, but he came back to the India. He pursued his career. He says, "I asked myself why I studied genetics. It was to produce enough food in India, so I came back." Despite being considered a world expert and holding important government positions, Swaminathan treated the people working with him with equality and respect, be it a tribal woman or a farmer or his young research student. So students, in each snapshots identify which of the following universal possibilities were demonstrated by the Swaminathan: being heroic, expanding myself, living in harmony, seeking perfection, developing Shraddha, being a truth seeker. So for snapshot 6, he demonstrated a universal possibility, expanding myself. And for snapshot 7, he demonstrated universal possibility, living in harmony. डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन, जो कि एक वैज्ञानिक थे, अपनी छोटी अवस्था में ही वो स्वामी विवेकानंद की इस शिक्षा से बहुत प्रेरित हुए थे कि दूसरों के लिए जीने वालों का जीना ही जीना है। वे अपने विज्ञान की शिक्षा से देश की सेवा करना चाहते थे। उन्होंने कहा भी था कि मेरे पिता डॉक्टर थे, अतः मेरे परिवार वाले मुझे भी चिकित्सा की डिग्री दिलाना चाहते थे। मैंने कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ने का निश्चय किया क्योंकि मुझे लगा कि स्वतंत्र भारत की इसी क्षेत्र में मैं और अधिक सहायता कर सकता हूँ। उन्होंने इस क्षेत्र में अपने PhD का विषय चुना जिसमें राष्ट्र को सबसे अधिक लाभ हो, और विदेश में अपनी PhD करने के बाद भी उन्हें कई आकर्षक प्रस्ताव भी दिए गए, लेकिन उन्होंने करियर में आगे बढ़ने के लिए वहाँ पर रुकना नहीं स्वीकार किया, बल्कि वे भारत वापस लौट आए। वे कहते हैं कि मैंने स्वयं से पूछा कि मैंने आनुवांशिकी का अध्ययन क्यों किया।
तो जवाब आया कि भारत के लिए पर्याप्त खाद्य उत्पादन करना था, इसलिए मैं वापस आ गया। दुनिया के एक विशेषज्ञ महत्वपूर्ण सरकारी पद पर रहने के बावजूद भी उन्होंने अपने साथ काम करने वाले लोगों के साथ समानता व आदरपूर्वक व्यवहार किया, इसकी परवाह न करते हुए कि वह आदिवासी महिला है या वो कोई कृषक या किसान है या वो कोई युवा शोध का छात्र है। और उन्होंने जो प्रसंग 6 था उसमें अपनी सार्वभौमिक संभावना को प्रदर्शित किया, जो थी स्वयं का विस्तार करना। और प्रसंग 7 में उन्होंने जो सार्वभौमिक संभावना को प्रदर्शित किया वो थी सद्भावना के साथ रहना, अर्थात दूसरों के साथ मिलजुल कर रहना, किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझना। Students, here are the some examples of unique possibilities that demonstrated by Dr. M.S. Swaminathan. Realizing a creative vision, working with collective intelligence, inventing new things, developing solutions to complex social challenges, expanding the limits of human knowledge. Some examples of universal possibilities that he developed or demonstrated: expanding myself and living in harmony. He is known as the father of the Green Revolution in India for making India self-sufficient in food production. So here are questions for you. Then how did M.S. Swaminathan's love for the country and expansion of self affect his choice of subject for his PhD? कैसे शो कर सकते हो आप उसे कि स्वामीनाथन अपनी कंट्री से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। एंड हिज करियर चॉइस, तो आपको उनके दोनों के रीज़न के साथ उन्हें बताना है कि कैसे किया उन्होंने। एंड नंबर 2 इज़ व्हाट आर द पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ हिज चॉइसेस ऑन इंडिया, कि जो उन्होंने चॉइस ली तो क्या पॉजिटिव इफेक्ट हुए इंडिया पर। एंड इन दिस एक्सप्लोरेशन यू कैन सी द वर्गीस कुरियन engineer. Do you remember Varghese Kurian from last year's class? We heard the name here, we studied about him. So here is the snapshot 1. During his first government posting in ceremony in Gujarat as an engineer, Kurian used his technical expertise to repair old machinery and get in new better equipments to improve milk production and qualities. And this is the snapshot 2. Kurian took up the complex challenge of milk shortage in India. He developed a solution, the Amul model, first for Gujarat, then later for the whole of India under the Operation Flood, and this included working with several groups of people, millions of village milk farmers, technical experts, bureaucrats, etc. In order to achieve his goal, Varghese Kurian invented innovations, ways of marketing, raising funds, distributing milk such that it doesn't go bad even when sent to the far off places, improving quality of milk produce, etc. This transformed India from a milk deficient nation to the world's largest milk producer, surpassing the USA. In each snapshots, identify which of the following unique possibilities were demonstrated: playing games and sports, adapting to the environment we live in, expressing ourselves, engaging with the culture and society, creating values, expanding the limits of my world, realizing a creative version, working with the collective intelligence, inventing new things, developing solutions to the complex social challenges, learning in all parts of our life, extending the limits of human knowledge. So some unique possibilities that is demonstrated by the Varghese Kurian for snapshot 1, that is creating values, and for snapshot 2, developing solutions to complex social challenges, and for snapshot 3, it's inventing new things. वर्गीस कुरियन के नाम से ही आपको याद आ गया होगा कि हमने लास्ट क्लास में जो ईयर 1 का जो मॉड्यूल हमने किया था उसमें भी हमने इन्हीं के बारे में पढ़ा था। गुजरात के क्रीमरी यानी कि मक्खन, घी आदि बनाने का जो कारखाना है उसमें इंजीनियरिंग के रूप में अपनी पहली सरकारी
पोस्टिंग के दौरान कुरियन ने दूध उत्पादन व गुणवत्ता में सुधार करने के लिए पुराने मशीनरी की मरम्मत तथा नए बेहतर उपकरणों को पाने के लिए अपनी तकनीकी विशेषज्ञता का प्रयोग किया था। उन्होंने भारत के दूध की कमी जैसे इतनी बड़ी जटिल और कठिन चुनौती को उस जटिलता को चुनौती के रूप में लिया था। पहले उन्होंने गुजरात के लिए अमूल मॉडल यानी एक समाधान निकाला था, अमूल मॉडल। फिर बाद में ऑपरेशन फ्लड के तहत पूरे भारत के लिए उन्होंने इसी को रिपीट किया था, दोहराया था। इस दौरान कई समूह के लोगों के साथ उन्होंने कार्य किया, जिसमें लाखों गांव के किसान, तकनीकी विशेषज्ञ और प्रशासक इत्यादि सब शामिल थे। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने मार्केटिंग, क्रय विक्रय, धन जुटाने व दूध वितरण में नवीनता की खोज की और दूध उत्पादन की गुणवत्ता में भी उन्होंने सुधार किया, जिससे कि दूध जो दूध प्रदेशों में भी जाता है तो कम से कम वो खराब ना हो। इससे अपर्याप्त दूध उत्पादक देश जो भारत था, जहाँ पर कि दूध की पूर्ति भी नहीं कर पाता था वो अपने लोगों के, अपने सभी गांव, तबकों और कबीलों में, शहरों में, वो अमेरिका जैसे विकसित देश को भी मात देते हुए दूध की कमी वाले देश से विश्व के विशाल दूध उत्पादक राष्ट्र के रूप में रूपांतरित हो गया था। तो यहाँ कुछ जो विशिष्ट संभावनाएं वर्गीस कुरियन ने प्रदर्शित की वो थी आपकी प्रसंग 1 के लिए मूल्य का सृजन करना, प्रसंग 2 के लिए जटिल सामाजिक समस्याओं के समाधान का विकसित करना या उसका विकास करना, और जो आपकी प्रसंग 3 था उसके लिए नई वस्तुओं का आविष्कार करना। इन दिस स्लाइड you can see here then in snapshot 4 when Kurian was first posted in Anand यानी कि गुजरात, तो he hated his job and wanted to leave. However, while there he was inspired by the Tribhuvan Das Patel, who was organizing village milk farmers into a cooperative so that they would not be exploited by middlemen. Kurian expanded his thinking beyond himself to include the problems of these farmers in Gujarat. Thus, when Tribhuvan Das told him, "We need you here," Kurian chose to stay and help. Following the success of the Amul model in the Gujarat, Prime Minister Lal Bahadur Shastri asked him to build the same for the whole of India. He accepted the responsibility and widened his thinking to work on the problems of the milk shortage across the India. Verghese Kurian never backed away from any challenge. He also stood up to political pressure. Example, during the implementation of the Operation Flood, he had to deal with the several officials, with the politicians who blocked the project because they didn't want to give up control of the dairy industry to the villagers. Kurian found alternate way to get the work done and keep his commitments. In each snapshots, identify which of the following universal possibilities were demonstrated by Verghese Kurian: being heroic, expanding myself, living in harmony, seeking perfection, developing Shraddha, being a truth seeker. So here are some universal possibilities that demonstrated by the Verghese Kurian. For snapshot 5 and 6, he demonstrated expanding myself, and for snapshot 6 and 7, he demonstrated his universal possibility being heroic. सर्वप्रथम जब कुरियन की आनंद यानी कि गुजरात में नियुक्ति हुई थी तो उस नौकरी से वो बड़ी नफरत करते थे, वो उसे छोड़कर जाना चाहते थे, लेकिन वहाँ वे त्रिभुवन दास पटेल से प्रेरित हुए जो गांव के दूध के काम में लगे हुए थे, किसानों को एक सहकारी के रूप में आयोजित कर रहे थे, जिससे कि बिचौलिए द्वारा उनका शोषण नहीं किया जा सके। यानी कि वो दूध का कुछ इस तरह से इम्प्लीमेंट करना चाहते थे, दूध बेचने का, कि वो डायरेक्ट कस्टमर तक जाए और जो बीच का जो मीडिएटर है वो उसमें पैसे ना खा पाए। कुरियन ने स्वयं से परे जाकर अपनी सोच का विस्तार कर गुजरात के इन किसानों की समस्याओं को उसमें शामिल किया, और इस प्रकार त्रिभुवन दास के यह कहने पर कि हमें यहाँ आपकी ज़रूरत है, कुरियन ने वहीं रुककर उनकी सहायता करने का चयन किया।
गुजरात में अमूल मॉडल की सफलता को देखते हुए प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने उनसे संपूर्ण भारत के लिए ऐसा करने को कहा और उन्होंने जिम्मेदारी स्वीकार करके अपनी सोच को व्यापक बनाकर भारत भर में दूध की कमी की समस्या को दूर करने का निश्चय किया। वर्गीस कुरियन कभी भी किसी चुनौती से पीछे नहीं हटे एवं राजनीतिक दबाव के बावजूद भी वो डटे रहे, क्योंकि जब भी आप कुछ अच्छा करते हैं तो एक पॉलिटिशियन प्रेशर ज़रूर रहता है आपके ऊपर। तो उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं कि ऑपरेशन फ्लड के कार्यान्वयन के दौरान उन्हें कई अधिकारियों और नेताओं का सामना भी करना पड़ा जो इस परियोजना को अवरुद्ध करना चाहते थे, उसे बंद करना चाहते थे, ब्लॉक करना चाहते थे, क्योंकि वो ग्रामीणों के हाथ डेयरी उद्योग का नियंत्रण नहीं देना चाहते थे। तो कुरियन ने इसके प्रति वचनबद्ध रहते हुए काम को पूरा करने का वैकल्पिक तरीका निकाला। तो यहाँ जो सार्वभौमिक आपकी संभावनाएं उजागर हुई हैं प्रसंग 5 और 6 के लिए, वो है स्वयं का विस्तार करना, और प्रसंग 6 और 7 के लिए सार्वभौमिक संभावनाएं जो प्रदर्शित की गई वर्गीस कुरियन के द्वारा वो था साहसी होना, यानी किसी भी परिस्थिति में डरकर पीछे नहीं हटना। So some examples of unique possibilities that is demonstrated by the Verghese Kurian: creating values, developing solutions to complex social challenges, inventing new things. Some examples of the universal possibilities that is developed by the Verghese Kurian: being heroic, expanding myself. He is known as the father of the White Revolution for transforming India from a milk deficient nation to the world's largest milk producer. So what if Kurian had thought of his own self-interest and did not respond to Tribhuvan Das Patel's need, choosing not to help the village milk farmers? So सोचो क्या होता है कि वो नहीं सोचते ना गांव की ज़रूरत के बारे में, ना किसी चीज़ के बारे में, तो क्या होता? What would have been the consequences on his own future? Second question is, what are the positive effects of his choice to stay back and help the milk farmer for the farmers for India for Kurian himself?